So hey guys, welcome to this new video. How are you? Bit cold in here. So today's topic is how to make your 2022 better, or you can say how to make 2022 better for yourself. So first thing is, आपने कब last thank you बोला था किसी को? When was the last time you said thank you to someone? Many people do so many things for us in our life, and we really feel grateful for what we currently have. हमें लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट what resources are you currently procuring for yourself? हम लोग grateful नहीं होते, हम लोग छोटे छोटे चीज़ के लिए grateful नहीं होते. हमें ambitious बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बट gratefulness हमारे अंदर नहीं होता है. We don't feel grateful at all. सो पहला पॉइंट होना चाहिए. ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मैं जो पॉइंट कवर करने वाला हूँ वो सब एक्चुअली रियल लाइफ में वैलिड करते हैं कि नहीं, ये आप प्लीज़ नोटिस करना. और अगर आपको लगता है कि ये मैं गलत कुछ बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई करूँगा. राइट. सो फर्स्ट थिंग इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. Being grateful for those people that have helped you in your life. We all are biological beings and we all are human beings. हमारे पास emotions है all and all. So कभी कभी हो जाता है कुछ mistakes जो हमें later life में it makes us feel regret कि I wish कि मैंने ये कभी नहीं किया होता. ये होता है, but क्या कर सकते हैं, life just moves on. If you have someone in your life who is really helpful to you, it could be your parents, it could be your brother, sister, your girlfriend, your boyfriend, whoever it is, just say thank you to them for all those little things that they have done for you till now. And that little thank you could spark a whole new level of connectiveness into your relationships. So gratefulness is really important. And कौन कौन लोग इस 2022 में रेजोल्यूशन ले रहे हैं? आई थिंक everyone should take resolutions in their life, and वो it shouldn't be just depend upon the year, but every time people should try to change something, some small things in their lives that could add values in for the long term. तो सेकेंड पॉइंट का होता है जो कि है keep yourself fit. एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट वीक में 4 या 5 डेज एक्सरसाइज करना चाहिए, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूवन कि एक्सरसाइज करने से हमारे मूड अच्छे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन लेवल अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है. तो देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एड वैल्यूज इन योर लाइफ व्हेन यू टेक द राइट अप्रोच. एंड एक्सरसाइज आई थिंक सबको करना चाहिए, एटलीस्ट वीक में 4 या 5 बार, बिकॉज यू नो आजकल के खाना पीना जो डाइट एंड ऑल है इस मॉडर्न वर्ल्ड के, दोज आर नॉट दैट मच हेल्दी फॉर योर बॉडी. एंड दिस इज़ टू बी ऑनेस्ट, अगर आप चिकन मटन ये सब पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए. यू शुड एक्सरसाइज एटलीस्ट 4 days इन अ वीक. आई वुड नॉट रिकमेंड जिम, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, जिम का मेंबरशिप ही, मतलब जिम में पैसा ही आता है. You never visit gym regularly, and that happens, guys. I know. 2022, if you want to make better version of yourself, then exercise करना चाहिए. Learn a new skill. Recently, Elon Musk ने कहा था कि if you are working on something that involves people or engineering, it's probably a good focus for your future. Artificial intelligence, machine learning, and all सारे जो बहुत सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं इस दुनिया में, वो बहुत से जॉब को ऑब्सोलीट बना देंगे. अ लॉट ऑफ जॉब्स विल बी ऑटोमेटेड एंड मोस्टली रिपीटेटिव जॉब लाइक डेटा एंट्री, टिकट कलेक्टर, बहुत सारे चीज़ ऑटोमेट हो रहे हैं. तो आप अपने आप को भी अपग्रेड करना चाहिए. अभी ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर डूइंग इफ़ यू हैव सम डिग्री एंड इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट, and that is a wrong approach, because in every 10 years the world will gonna change and your life is going to go upside down when that change happens. So be prepared, guys. Have a mindset of learning. Okay, you have to learn new things every single day, or maybe try new different things every week.
अगर if you are not getting enough time from your job or business or whatever it is, at least put some time to research and explore new topics, new areas that could maybe interest you. So learning a new skill is really important. So 2022, I think that everyone should actually try something new, learn some new skills like digital marketing. There are a lot of things. I'm not telling just digital marketing. Start something, create something, at least start. So starting is the key. And I have seen a lot of people कि वो फर्स्ट स्टेप लेने से इतना डरते हैं कि वो आगे देख ही नहीं पाते. Just imagine this, your life could change just because you have taken that one single step. तुम अपने आप को थैंक यू बोलोगे 5 साल बाद बिकॉज तुमने वो स्टेप लिया है. यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर समय एम्बिशन करते रहो कि मुझे ये करना है. आई वॉन्ट टू बी अ टॉप लेवल परफॉर्मर. मैंने ऐसा नहीं बोला है. एन्जॉय करो लाइफ को, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने लव्ड वन के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बट काम के टाइम पे काम करो. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट if you're not giving time for yourself, then no one will be that much interested in giving their time to yourself, because आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं करते. So why should other people value you? So the next point that will make you a better version in 2022 is travel more and do just nothing. So काम के बीच में sometimes when you're working, when you're hustling in your job, in your business or whatever you're doing, you should travel sometime. Traveling से क्या होता है, दिमाग को एकदम खोल देता है. ये free thinking is developed through traveling. Imagination is also created through traveling. अलग अलग जगह में ट्रैवल कीजिए, कुछ नया कल्चर सीखिए, meet with different people. जैसे recently I went to Punjab to learn the culture, their cultures, their foods. I met a lot of people there. I talked to them and मुझे अच्छा लगा. तो ट्रैवल से कुछ लोग को ट्रैवल अनकंफर्टेबल लगता है एट फर्स्ट. जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल लगेगा फर्स्ट, वही चीज़ आपको करना चाहिए. बिकॉज यू नेवर नो कि वो आपको किस मुकाम तक ले जाएगी. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रैवलिंग एक्चुअली हेल्प्स. इट हील्स यू. इट गिव्स यू न्यू आइडियाज दैट यू कैन यूज इन योर लाइफ और बिजनेस और वट एवर. यार आज मैंने कुछ नया चीज़ देखा. मैंने आज एक आई जस्ट सॉ अ फ्लावर टुडे. वो क्यूरियसिटी लाओ अपने में कि ट्राई टू एम्ब्रेस द लिटिल थिंग्स. ट्राई टू एम्ब्रेस दैट लिटिल थिंग्स. बिकॉज हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में, वी फेल टू सी द ब्यूटी अराउंड अस. इतना हम बिजी हो जाते हैं लाइफ में. सो डोंट बी दैट डेड सीरियस काइंड ऑफ मेंटेलिटी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बस फोकस रहना है यार, मुझे बस फोकस रहना है लाइफ में. Yes, focus is really important, but also you should spend some time doing nothing, because there is also an article, Entrepreneur India, that according to neuroscience, taking a break from your busy schedules and devoting time to doing absolutely nothing is the key to fostering creativity. Well, basically, if you spend time doing nothing, you increase, you develop, you encourage your creativity. That is what I'm telling according to an article by Entrepreneur India, as you can see from the title. So coming to the next point, which is learn about money. This is one of the really incredible factor that you should keep in your bucket list for 2022. जब आप resolution कुछ ले रहे हो, always think about money should not be your primary goal, but at least you should learn about finances, because इस दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो एटलीस्ट कुछ फिनेंशियल नॉलेज अपने अंदर रखता है. यू कुड बी अ डॉक्टर, यू कुड बी एन इंजीनियर, यू कुड बी अ डेटा साइंटिस्ट, यू कुड बी एन एनीथिंग, आर्टिस्ट, पेंटर, एनीथिंग, बट यू हैव टू नो लिटिल बिट ऑफ फाइनेंस, लिटिल बिट ऑफ हाउ टू मैनेज योर मनी प्रॉपरली. बिकॉज फिनेंस अगर अच्छा होगा तो आपका कुछ भी चीज़ करने में ज़्यादा मन होगा. बिकॉज मनी इज़ द बैकबोन ऑफ योर फ्यूचर. एटलीस्ट कुछ हद तक, मैं सब नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ हद तक मनी इज़ नेसेसरी टू survive and thrive in this society to some sort of level. And
जितना भी आप इग्नोर कर लो, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते. How much you pretend to ignore this thing, but money matters, and money, some extent you should learn about money. And if you haven't watched my video about how I manage my money in my 20s, then I will give a link in the description of that video. You can watch that and you can understand a basic principle about money and all, just my perspective. Okay, so moving to the last point, guys. I will not extend this video too much. So last point is start writing. Recently I was scrolling through Instagram, so I just came upon a post by Jordan Peterson, whom I admire a lot. He's a clinical psychologist. So here is a post I'm showing you guys. So here Jordan Peterson have made this post like how to become deadly. So if you, the best way to teach people critical thinking is to teach them to write. Okay, because there is no difference between that and thinking. No one tells students why they should write something. Well, why like that. So you need to learn to think, because thinking makes you act effectively in this world. Okay, you can, if you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. If you can speak to people, lay out a proposal, make a presentation, formulate arguments coherently, people will give you money, they give you opportunity, and you have an influence. So the thing is that writing helps you to think. Writing helps you to think better. Writing helps you to point out all those flaws and weakness or strengths that you have. Or writing helps you to be self-aware कि आप actually life में क्या चाहते हो और actually life में क्या कर रहे हो. So that is a clear-cut example of why you should start writing. कुछ भी लिख दो, कुछ भी लाइफ में क्या चल रहा है डेली, उसके बारे में ही लिखो. स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट. सो दैट वुड बी माय लास्ट पॉइंट, इज स्टार्ट राइटिंग. एंड मैं भी लिखता हूँ, मैंने भी जर्नलिंग स्टार्ट किया है अराउंड 2 years पहले से. सो इट्स नॉट दैट हार्ड. स्टार्टिंग में सब कुछ ही हार्ड लगता है. सो स्टे सेफ गाइज, फॉलो दिस पॉइंट, एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड एनी वैल्यूज, देन हिट द लाइक. And I wish you a very prosperous and happy 2022. Thank you guys. See you in the next video.